OBS में चालू है। Okay, like. सर सेव करा तो कोशिश करें। Good afternoon, guys. Am I audible? Please confirm. Am I audible and visible? Please confirm. Yes, guys. So, welcome to RAO'S Academy, and my name is GAURAV Gupta, your faculty for geography. So, from today onwards, we are starting NCERT series for geography subject. And guys, as you know, that geography is one of the most crucial subject at both stages, prelims and mains, rather at the interview also, right? Even in interview, they can ask about some cyclones, they can ask some questions related to disaster management, which is again an integral part of geography itself. Or they may ask about the monsoon mechanism, their impact on Indian economy, and so on. So basically, let's start this session. So keeping in mind the utility, the importance of this subject, geography for UPSC civil services exam. So we are starting today the 6th class NCERT session. So let us check how many students are live right now. Okay. So yes, guys, am I audible? Am I audible? Okay, so basically for geography, there are two types of advice which are given to students. First, students will be asking, sir, from which class up to which class we should study for geography. See, it's very simple. अगर आपके जो basics है, they are very clear. So in that case, you can go from 9 to 12 class NCERT. But yes, if you are not having a bit comfort level with a geography subject, you're not clear with your basics, then in that case, you should, you start with 6th class itself. So keeping in mind the basics in the place, so we are starting with the 6th class NCERT right now. So in 6th class NCERT, the first chapter is the solar system. So guys, here I'm not going to read all this stuff which is written here. Okay, I'll be giving you orientation that how you have to approach for NCERT books, because NCERT books, they have been written for class 6th students. They have not been written for UPSC aspirants. So they have been written for class 6th students. But yes, it is very useful for us, for the aspirants basically. So basically, we'll be trying to identify that how we have to develop an approach, which area to be picked up from these lines, and what to study and what not to study when it comes to NCERTs. So this first chapter is the solar system, or in simple words, we can say the cosmology. Okay. So basically, in this particular subject, keep in mind that this particular lesson or chapter, the solar system, it is almost 60 to 70% based on current affairs. They're not going to ask about the sequence of the planets, biggest planet, smallest planet, so on. They're not going to ask this thing. What they will be asking about a large hadron collider experiment. They can be asking about solar winds, solar storm. They can be asking about some, meteorological or cosmological phenomena like this. But yes, the understanding of the basics is very important. It's very crucial when it comes to having a command over geography. RAO'S IAS Academy, we have a batch, Bunyad batch, which is totally dedicated for covering of NCERT syllabus. Just check out our website. You'll be getting entire details there. So the sun, the moon, the 8 planets,
they all are combinedly forming our solar system. And like in every family, there is a head. Like usually our mother or father, they are the head of the family, or maybe in joint family, the grandfather, the grandmother. So in the similar way, in the entire the solar family, the sun is the head of this entire family, okay, in the solar system. Then sun, so of course it is at the center of the solar system. It is at the center of the solar system, and it is made up of hot gases, mainly hydrogen and helium. So it is undergoing the process of nuclear fusion reaction. There are two types of nuclear reaction: nuclear fission and nuclear fusion. So sun is undergoing with the reaction of nuclear fusion. Nuclear fusion reaction basically produces enormous amount of energy. It produces enormous amount of energy. It is having a very high temperature, and of course, near the surface of the sun, it's not possible to remain in a solid state. But basically, we are having a moderate climate, a moderate temperature on Earth, because we are located almost about 150 million kilometers away from the sun. Okay, so sun is basically based on the reaction undergoing on sun. Sun is basically nuclear fusion. So nuclear fusion reaction releases enormous amount of energy. This you have to keep in mind. So for example, hydrogen bomb. So hydrogen bomb is based on nuclear fusion reaction. Okay, in the same way, the nuclear fusion reactors. So nuclear fusion reactors, they are also referred as artificial sun. So these are some current topics which we can relate with the topic of sun itself. So you should, apart from this, in the subsequent books, or maybe by doing your own research work, you should be able to understand some other topics like sunspot. कि sunspot क्या होता है, sunspot का impact क्या होता है planets पे, what is the impact of sunspot on planet Earth, how sunspot can alter the monsoon cycle in India. This is the month of monsoon. So how sunspot can impact the monsoonal cycle or monsoonal rainfall in India. So these are some of the areas which, apart from reading these books, you have to be focusing on. Okay, so sun is the head of the family, made up of hot gases. Yes, so it is made up of hot gases, and it is providing a binding force to the system. Means its gravitational pull, it is binding other planets including Earth into this system. Then it is the ultimate source of heat and light for the entire solar system. So these are some of the basic things. You are already aware of this thing. Yes, the PDF of this particular lecture, it will be shared on our websites, on our Telegram channel, and maybe in app also. So you can download it from there also. Next. So this is the solar system. This is our solar system. Then okay, guys. So apart from this particular books, you should also focus on Atlas, because Atlas is again a very important part in this preparation of geography subject. So for Atlas, you can purchase Oxford Student Atlas. You can go through the boundaries, the coastlines, our countries sharing with other oceans or the sea. Okay. Then the planets. So there are 8 planets in the system. There are 8 planets in the system, and Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. So these are some of the planets. So maybe some of you missing that sir, Pluto कहाँ गया यहाँ sir, right?
So why Pluto is not regarded as a planet? Comment box में जरूर लिखना है सबको, right? Why Pluto is not regarded as a planet? ये comment box में सब लोग लिखेंगे इसको. Anyways, so the planets, they revolves around the sun on a fixed path known as orbit. So basically, like at the center we have sun. This is the orbit around the sun. And here we have the planets which are revolving around the sun, right? Like for example, this is a planet. So this planet, these planets are revolving around sun like this, right? So in the path in which these planets are revolving, these paths are known as orbit. These paths are known as orbit. So Venus is considered as the twin of Earth. So guys, this particular information is important, but not for UPSC. Apart from UPSC, if you are appearing for other certain exams, so in those exams particularly they have asked number of times this question, but yes, from a UPSC point of view it is not that much significant. Anyways, moving forward, so Pluto is a dwarf planet which was discovered in recent past. So recently, because this line has been written in NCERT, so we are taking full reference of NCERT in as it is form. So yes, but technically it has been dropped to be called as a planet. Next. Earth. So Earth is the third nearest planet in the sequence from Sun. It is the third planet and the fifth largest planet in the solar system. Then the specialty about the Earth is, like here you can see it is flattened on poles and it is bulging on equator. So this is basically because of the rotational force. So technically it cannot be called as a sphere. If someone asks you what is the shape of Earth, just hold on guys. If someone asks you what is the shape of the Earth, and you will say, okay, it's a spherical shape, it's a sphere. So Earth is not a perfect sphere. It is flattened on the poles, bulging on the equator. So it is basically regarded as, the shape of the Earth is called geode. The Earth is a geode-shaped planet. Earth is a geode-shaped planet, right? So it is also regarded as blue planet. Why? Because almost 70% part of Earth is covered with the oceanic water only. So from space, it will be appearing like a blue color planet. So it is commonly referred as blue planet also. Okay. Next. So this is the geode-shaped planet. This is the geode-shaped planet, or this is the shape of a geode. So here you can see that it is bulging on equator. It is partially, flattened on the poles. So this is the exact shape of the Earth. This shape is known as geode. The shape is known as geode. Yes, any question, any doubt? Anyone having any question, any doubt? Okay, let's move forward now. The moon. So moon is the natural satellite of Earth. It is the natural satellite of Earth. It is just 1/4 size of the Earth. जितना अर्थ का साइज है उसके जस्ट 1/4 साइज है किसका, मून का. बट इवन देन जो मून है इट अपीयर्स बिगर इन साइज. ऐसा क्यों है कि अर्थ के 1/4 साइज का है मून, ठीक है, यानी जस्ट 25% एरिया ऑफ द अर्थ, बट still it appears bigger. So why this is so? So this is so because moon is very near to sun, very near to earth as compared to sun, right? So moon is very nearer to the earth. So because it is a nearer body near the earth, that's why its size appears quite bigger. So then basically it moves around the earth in orbit, and
taking 27 days to complete one spin. Next, the full moon is only seen once in a month at full moon night or Purnima. So यहाँ पे लिखा होगा पूर्णिमा, अमावस्या. What is this thing? Let us see. Let us try to understand this thing. Like for example, here we have sun. This is the earth. And here we have the moon. So this moon is revolving around earth like this. It is revolving around earth like this. So what happens when there is a position like this? That here we have the sun, moon, earth. When this position is there, so the sun rays, they are falling straight over the moon also, and then they are falling on the earth also. But only half of the portion of the moon will be able to get sunlight. This half portion, this side, it is not getting any light. So earth से जब हम इसको देखेंगे, तो moon does not has its own light. It is basically glowing because of the light of the sun. So क्या होता है कि इस side में इसके light पड़ रही है, but this side is not visible to us. We are having the visibility of this dark side. So that's why यहाँ पे earth को इस time पे क्या होगा, moon नहीं दिखाई देगा. So this time is known as the time of new moon or अमावस्या. Okay, dark night होती है पूरी ये. Similarly, when instead of this place, moon is located somewhere here. Okay, moon is located somewhere here. Now, when the sunlight is falling on earth, it is also falling over the moon. It is also falling over the moon. So that's why on earth we can easily see the glowing moon. तो इसको बोल दिया हमने पूर्णिमा और द फुल मून. देखते हो ना, महीने में अराउंड 14 डेज पे 15 डेज पे पूर्णिमा और अमावस्या हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आता है. So this is because of this revolution of moon around earth. Is this clear? सबको clear है चाहिए guys? Okay, now moving forward, we have the stars. So stars again, they are based on nuclear fusion reaction, and they are far away from the earth. So that's why they appear very smaller in size. Okay, so they have their life, and stars की भी एक life होती है, and accordingly they die also. So they form some pattern. अब ये patterns ऐसे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इस डायग्राम में दिख रहे होंगे कहीं पे कुछ बना हुआ है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ऐसे आपने वर्ड्स पढ़े होंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टार को गए, मतलब अपने रूफ टॉप पे गए, ऊपर स्काई में देखने लगे, देन यू आर सीइंग कि कहाँ पे स्कॉर्पियो बन रहा है, किधर कैसी शेप बन रही है, बिकॉज दीज आर स्प्रेड ओवर सेवरल थाउजेंड्स किलोमीटर. तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि अच्छा हम पूरा एक कॉन्स्टलेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक नेकेड आइज से. सो बट यस, दे मेक सम पैटर्न. सो दीज पैटर्न्स आर नोन एज constellations. So there are several type of constellations on earth. Okay, so these stars are making several types of constellations. Saptarishi, that is the group of 7 stars and all. Next, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोराइड्स. ये बहुत काम की चीज हो जाती है हमारे लिए. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मीटियोर भी सेम है, मीटियोराइड भी सेम है, मीटियोराइड भी सेम है. बट ऐसा सेम कुछ नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस. देयर इज अ डिफरेंस. सी गाइस, इफ देयर इज अ बॉडी व्हिच इज लोकेटेड आउटसाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ये कोई चंक हो सकता है, ये स्पेस का कोई बहुत बड़ा चंक हो सकता है, किसी प्लैनेट का कोई टूटा हुआ कोई हिस्सा हो सकता है बहुत बड़ा सा, मतलब इट मे बी ऑफ अ साइज ऑफ अ माउंटेन इटसेल्फ. ठीक है, बहुत बड़े बड़े चंक्स हो सकते हैं ये. सो व्हेन दे आर लोकेटेड इन द आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, देन दे आर नोन एज मीटियोराइड. तब इसको हम बोलेंगे मीटियोराइड. वंस दे हैव एंटर्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, देन दे विल बी रिगार्डेड एज मीटियोर.
एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो हमारे गैसेज है, स्पेशली इन मीजोस्फेयर, आगे हम देखेंगे, नॉट इन 6th क्लास एनसीईआरटी, आगे की एनसीईआरटी हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर्स होती है, जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मीजोस्फेयर हो गया, ठीक है। तो मीजोस्फेयर में जो है टेम्परेचर काफी कम होता है, जिसके से जो गैसेज होती है कंडेंस हो जाती है, एंड कंडेंस्ड गैसेज हैव वेरी हाई डेंसिटी। तो क्या होता है, ऐसी गैसेज से जब ये मीटियोर टकराता है, ये बॉडी टकराती है, तो इट स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन स्टार्ट्स बर्निंग, ठीक है। तो वो ग्लो होना स्टार्ट हो जा रहा है, जैसे आपने कोई मूवीज में देखा होगा टूटा हुआ तारा दिखता है, वो टूटा हुआ तारा नहीं होता, आप गए उससे विश मांगने लग गए, सो है ना, लेकिन वो बेचारा, वो खुद बेचारा बर्न हो रहा है, वो दैट इज कन्वर्टिंग इनटू एशेज, जिससे आप विश मांग रहे हो। बट एनीवेज, सो दैट इज नोन एज मीटियोर। और समटाइम्स इट हैपेंस कि जब मीटियोर पूरी तरह से बर्न ना होके पूरी तरह से एशेज में कन्वर्ट नहीं हुआ, एंड कुछ अनबर्nt मटेरियल ऐसा नहीं कि एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा गिरेगा यहाँ पे, इट मे हैव अ डायमीटर ऑफ 1 किलोमीटर, इट मे हैव अ डायमीटर ऑफ 500 मीटर, इट मे हैव अ डायमीटर ऑफ 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इतना बड़ा चंक हो सकता है। When it is falling on the earth, then it is referred as meteorite. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, राइट, सो गाइस इंडिया में देयर इज अ लेक जो बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म हुई है, कमेंट बॉक्स में बताना है सबको चीजें। इंडिया में देयर इज अ लेक which has been formed like this only due to the meteorite impact, ठीक है। कैसे, इसका नाम है लोनार लेक, इट्स इन महाराष्ट्र। तो लोनार लेक in India, it has been formed because of the meteorite impact. It was in news, I think 2 years back, it was in news, 2 years or 3 years maybe, right? Because its water was converting into pink color. So it was some reaction by bacteria or something else. Just check out that news also. Okay. So let's move forward. Then we have the Milky Way galaxy. So Milky Way galaxy, simple, like the collective, collection of the entire planets, the systems, the solar systems, and the alike systems like this. So they are combined to form a galaxy. So we are, existing in the Milky Way galaxy. Chali. So this is all about this thing. Now, next thing, globe, the latitude and longitude. The latitude and longitude. So guys, like here you can see all these lines, which are horizontal lines. These all horizontal lines are referred as latitudes. इनको क्या बोलेंगे हम? Latitudes. जैसे यहाँ पे दिख रहा है, these all are they are referred as latitude. So these all are latitudes. Okay. Latitudes. This equator is the largest latitude. That's why it is also referred as great circle. This equator, it is the largest latitude. That's why it is also referred as great circle. Then this pole, 90-degree pole, 90-degree north, 90-degree south. The pole is the smallest latitude. Largest equator, smallest pole. Pole is represented by a dot on the map. So it is the smallest latitude. Okay. So latitudes are basically used for determining the distance. They are used for determining the distance. So 1 degree latitude is approximately equivalent to 111 kilometer. Is approximately equivalent to 111 kilometer. Okay. Then we have the longitudes. These are the longitudes, the vertical lines. These are the longitudes. So these longitudes, what is the utility of the longitudes? See, the utility is very simple. The longitudes are basically used to determine the time. Like this is the Earth. Earth is tilted on its axis around 23.5 degree. It is tilted because of two reasons. One, that it was hit by a very large planet body, जिसकी वजह से ये एक्सिस अपने टिल्ट हो गई थी, तिरछी हो गई थी.
Another possible reason is the gravitational pull of large planets like Saturn and Jupiter, right? But anyways, so Earth is rotating on its axis from west to east direction. So the place which is located in the eastern side, this place will be the first to see the sunrise, and the place on the western side, it will be the last to see the sunrise. So basically ईस्टर्न की साइड हम देखेंगे सनराइज हो रहा होगा, इधर हम देखेंगे सनसेट होता दिखाई देगा, राइट? सो बेसिकली क्या होता है कि these latitudes are basically used to determine the time. वो कैसे डिटरमाइन होता है? बहुत सिंपल चीज होती है कि 360 डिग्री में अर्थ, मतलब 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री का एंगल घूमती है, तो 1 डिग्री एंगल पे अर्थ कितनी देर में रोटेट करेगी? तो ये ऐसा हम इसको डिवाइड करेंगे, 24 आवर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स इनटू सेकंड्स। सो 1 डिग्री में अराउंड, मतलब 1 डिग्री कितनी देर में घूम रही है? अराउंड 4 मिनट्स हम कह लेंगे, ठीक है ना? एनीवेज, सो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की यूटिलिटी क्या है, कलेक्टिवली इसकी यूटिलिटी क्या है? सपोज इफ आई आस्क यू कि प्लीज ओपन चैप्टर नंबर 3, तो देयर विल बी सम स्टूडेंट्स जो कैसे पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 कैसे ढूंढेंगे, वो ऐसे स्टार्ट करेंगे, ओके ऐसे पूरी बुक को अलग पलट के रख देंगे, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे? दे विल सिंपली चेक द इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स दिख रहा है, पेज नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, it's on page number 19. So directly with the least effort they will be approaching to the page number 19. Are you getting me? So similar way, these latitudes, longitudes, they act as the index of the earth. For example, if I ask you to please locate the Africa continent on the map, oh, Africa continent तो easily आप बता दोगे, एकदम देख के पता चल जाएगा, right? Similarly, if I ask you please locate मैप ऑफ इंडिया ऑन मैप, इंडियन मैप, तो वो या बता दोगे, इंडिया का बता दोगे आराम से मैप पे, राइट? सपोज इफ आई आस्क यू टू लोकेट डीगो गार्सिया आइलैंड, और इफ आई आस्क यू टू लोकेट थेनी डेजर्ट इन इंडिया, थेनी डेजर्ट, तो उसमें दो केस होगा। थेनी डेजर्ट के केस में या तो आप गूगल चेक करना स्टार्ट करोगे, कुछ हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, ठीक है ना, तो या तो गूगल चेक करना स्टार्ट कर दोगे, या फिर आप थार डेजर्ट में, राजस्थान में थेनी डेजर्ट ढूंढोगे, लेकिन दोनों ही जगह नहीं मिलेगा। थेनी डेजर्ट जो है बेसिकली वो तमिलनाडु कोस्ट पे पड़ता है, थेनी डेजर्ट। सो फीचर देखने में डेजर्ट जैसा लगता है, लेकिन इट्स नॉट अ प्योर डेजर्ट, देखने में वो फीचर डेजर्ट जैसा दिखाई देता है, ठीक है? तो बेसिकली अगर, बट इफ यू हैव द कोऑर्डिनेट्स, अगर आपके पास इन प्लेसेस के कोऑर्डिनेट्स है, इनके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स है, तो इजीली यू कैन रीच टू दिस प्लेस। यू मे हैव सीन सम मूवीज जिसमें दिखाते हैं कि आर्मी जो सोल्जर्स है, आर्मी ऑफिसर्स है, कमांडो है, तो दे जस्ट गेट द कोऑर्डिनेट्स को ट्रैक करते हुए दे कैन रीच फ्रॉम वन प्लेस टू वन अनदर प्लेस, या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी प्लेस को स्पॉट करना है तो कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे कर लेंगे। मूवीज लाइक बेबी, उरी, इन सब में कोऑर्डिनेट्स यूज किए हुए, राइट? सो दीज लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स दे एक्ट्स एज अ index of the earth. Another important thing is the network of latitudes, and longitudes. The network of latitudes and longitudes is referred as graticule. The network of latitude and longitude is referred as graticule. Books में लिखा होगा grid. तो grid is a common name for any such type of pattern. Technically it is referred as graticule. इसको कहीं पे जरूर लिख लेना, it is very important. NCERTs जब आपने पढ़नी है तो NCERTs पढ़ने के लिए अभी जैसे अपने नोट्स बनाओगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, अभी हम क्लास वाइज NCERTs को करेंगे। क्लास वाइज करने के बाद आपने फिर क्या करना है कि जो नोट्स बनाओगे वो क्लास वाइज बिल्कुल नहीं बनाना है कि 6th क्लास NCERT के नोट्स अलग बना रखे हैं, 7th क्लास के, 8th क्लास के, नॉट लाइक दिस। यू हैव टू मेक अ कंबाइंड नोट्स, क्योंकि सोलर सिस्टम अभी 6th क्लास से स्टार्ट होगा, आगे सारी बुक्स में मिलेगा आपको, मैक्सिमम बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो देयर आर सो मेनी चैप्टर्स जो 6th क्लास के NCERT से लेके 12th क्लास के NCERT तक में मिल रहे हैं, तो सारी बार बार तो सेम चीज को नहीं लिखोगे, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल बी क्लबिंग ऑल दीज नॉलेज
all these information at one place and will be making holistic notes for NCERT. I hope it is clear to everyone. Yes, I hope it is clear to everyone. So guys, moving forward now. So this is Tropic of Cancer. Here we have the Tropic of Cancer. Around 23.5 degree north, we have Tropic of Cancer. And this side, 23.5 degree south, we have Tropic of Capricorn. So this is because of the tilt of the earth. So this portion is getting maximum sunlight. It is getting maximum vertical sun rays. Okay. Now let us move forward. So these are the heat zones of the temperate zones. So obviously, this particular zone, it's quite obvious thing that this particular zone between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, it is getting maximum sunlight. So obviously the temperature will be high in this region. Above this region, this particular portion near the poles the temperature is very low, because of which these are the permanently freezed regions or the frigid zones. And between the poles and the hot zone, we have the temperate climatic regions, which are known as north temperate zone and the south temperate zone. This is just because of the sun, angle of insolation, angle of sunlight. Okay, this is just because of the angle of insolation or angle of sunlight. Let's move forward. So frigid zones I have discussed already. These are very cold zones. Longitudes, latitudes, we have discussed all these things. Let us move forward now. Yeah, rotation and revolution. So what is the difference between rotation and revolution? Rotation and revolution. See, suppose this is Earth. वैसे ये Earth ही है, ठीक है ना? So when Earth is rotating on its axis, so this is rotation. ये क्या हो गया हमारा? Rotation हो गया. So it is making one rotation in how many time? Approx 24 hours. ठीक है. So additional जो time है वो add up होता है leap year में चला जाता है आगे. I hope सबको clear होगा चीज़ वो, ठीक है. So basically क्या होता है? It is making, it is rotating on its axis in 24-hour cycle. Then it is revolving around sun. Sun के चारों जो चक्कर लगा रही है इसको हम बोलेंगे revolution. तो वो 365 days 0.6 hour होता है, तो 6 hours आगे carry forward होता है और 4th year में आके वो बन जाता है leap year हमारा, ठीक है, जब 29th Feb आती है. So basically this is the rotation, and when it is making a circle around the sun, that can be referred as revolution. I hope it is clear, rotation and revolution. Next, axis. So axis, this particular axis on which the earth is rotating, this is the axis. Then now the interesting thing I will tell you, check this. So this is the torch. So suppose this is the sun and the sun rays are falling in this particular zone. This is the portion of the earth which is facing the sun directly. So what happens? That much portion of the earth which is facing the sun directly, वहाँ पे क्या होगा? एकदम ब्राइट कलर, जैसे ऊपर ये लाइट है, इससे देखते तो ये लाइट यहाँ पे क्या कर रही है? डायरेक्ट पड़ रही है इतनी एरिया में. So this is the brighter part. And the zone opposite to this brighter part, ये वाला part, यहाँ पे क्या होगा? Darkness होगी. So earth क्या होगी? Half earth will be brightened, half earth will be in the dark phase. So the line which is dividing the brighter time from the darker time, that line is known as circle of illumination. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखेगा अभी. तो leave it, मैंने यहीं पे बता दिया. The circle that divides, so this much portion it is getting sunlight at a particular time, तो ये brighter portion होगा. इसके opposite side वाला जो portion है, that is a darker zone. So यहाँ पे क्या होगा? Darkness होगी. So the line, you know, dividing brighter light, brighter portion from the darker zone, that particular line is referred as circle of illumination. Second thing,
equinoxes. Like we have equinox, we have summer solstice and we have winter solstice. What does this means? इसका क्या मतलब होता है summer solstice, winter solstice? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है गाइस. So here we have sun, right? Then this is the orbit of Earth around the sun, and here we have the Earth. But guys, Earth is tilted on its axis. How much? 23.5 degree. So it is tilted on its axis at an angle of around 23.5 degree. So what happens at any point of time, you will see that these sun rays are falling vertical over the northern hemisphere. And similarly, when this Earth, after rotation, when it is coming to this position, so these sun rays will be falling straight over the southern hemisphere. So one time in one season, the sun rays will be vertical over the northern hemisphere, and in another season, the sun rays will be vertical over the southern hemisphere. So when it is vertical over the northern hemisphere, that is when the sun rays are falling straight over Tropic of Cancer. This part is known as summer solstice. Summer solstice. Which date? 21st June. अभी 2-3 दिन पहले ही था ये. इंडिया में भी क्या चल रहा है? Summer solstice. ठीक है. So the countries which are located in this zone, they will be having longest day on 21st June. Are you getting me or not? Similarly, this particular portion. So this is the southern hemisphere. Okay. This is the southern hemisphere, and again the sun rays will be falling straight over the Tropic of Capricorn on 22nd December. 22nd December. So this is the time when this the countries like Australia, New Zealand, they will be having summer season. 25th December, during the time of Christmas, they will be having scorching summer there. 22nd December is the time of winter solstice. This is known as winter solstice. In between, there are two positions when the sun rays are falling straight over equator. So these positions are known as equinox. These are known as equinox. Why equinox? Because at this position, the length of day and night will be almost equal. The length of day and night, it will be almost equal. It will be same. So that's why this position will be referred as equinox position. I hope सबको clear है ये चीजें. So 21st March, 23rd September, these are the time of equinox. In simple ways, एक दूसरा डायग्राम भी बनाते हैं हम लोग, जब हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स को भी दिखाते हैं. Earth, equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, and equator. So basically, when sun is vertically overhead over Tropic of Cancer, this is the position which is known as summer solstice. When sun is vertically overhead over Tropic of Capricorn,
So it is known as winter solstice. This will be occurring on 21st June. This 22nd December. And when the sun is vertically overhead over equator, so this position is referred as equinox. This position is referred as equinox, which occurs on 21st March and 23rd September. So in certain exams, UPSC, in certain other exams conducted by UPSC, they have asked that in a single year, how many times sun remains vertically overhead over equator. So 2 times, rest 1 time. Yes, now clear to everyone? Now clear to everyone, guys? Okay, let's move forward now. So this is all about summer solstice, winter solstice, and the equinox. Next, so this is the chapter 4, maps. See, maps is the part of the study of maps is basically referred as cartography in geography. So cartography is a specialized stream in geography which deals with map making, deciphering the maps and all this thing. So there are certain techniques through which maps are made. Like we have the conical method, we have the cylindrical method, we have the paper method, all these things. So as of now, it is not so relevant for us to study about the map part. But yes, in general, because UPSC asks about some map-based questions basically. Like they will be giving you some 3-4 names of the countries. Then they will ask which of the following countries making coastline with Black Sea, which of the following countries are making coastline with Mediterranean Sea, or which of the following countries are landlocked country. Landlocked country का मतलब होता है जब country चारों तरफ से land part से surrounded है. It is not having any access to any ocean or sea. ठीक है. So ऐसे cases में map आपको थोड़ा बहुत idea होना चाहिए. So in general, there are 3 types of map. In general, there are 3 types of map. So one is known as the physical map. Physical map, for example, if I'm asking you to locate Deccan Plateau of India, or if I'm asking you to please locate Western Ghats of India, Eastern Ghats of India, or maybe the Himalayan ranges of India. So these are what? These are the natural physical features. To identify, to observe the physical features, basically we have to refer to the physical maps. It may be the mountain range. It may be a peak. Let's say if I ask you to please locate the highest peak of India. Please write in comment, highest peak of India. So the highest peak of India is K2 or Godwin Austen. It is located in Karakoram range, presently in POK, Pakistan occupied Kashmir. Okay, so physical map, it will be having, it will be showing mountain ranges, it will be showing peaks, plains, plateaus, valleys, rivers, etc., etc. Okay, similarly, if I ask you to please locate landlocked countries in landlocked states in India, then you have to see political map. If someone is asking you to check from how many states the Tropic of Cancer is passing through in India, from how many states? So Tropic of Cancer is passing through 8 states. It is passing through 8 states, starting from Gujarat, Rajasthan, MP, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura, Mizoram. So these are the states. So the map, when we are supposed to observe the boundaries of the states, when we are supposed to check which line is crossing from how many states, so such type of thing you have to observe on the political map. States, union territories. Let's say if I ask you how many coastal states do we have in India? So we have how many states? Coastal states. We have 9 coastal states in India. Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka,
Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, and West Bengal. So we have 9 coastal states. So all these type of aspects, they are observed in the political map. Then third category is it is very important, thematic map. Thematic map. So what is the work of thematic map? Thematic. So it is basically based on various themes. There will be a map which is showing the population density of different regions in India. There will be a map which is showing the sex ratio in different states in India. There will be a map which is showing the rainfall pattern. There will be a map which is showing the temperature conditions in different states. So theme-based maps are basically referred as thematic maps. So basically a UPSC aspirant should be concerned with all these three: physical map, political map, thematic map. Particularly if you are studying only the GS part. अगर ये ऑप्शनल की बात आती है तो ऑप्शनल में कार्टोग्राफी आती है, उसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू हियर, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, I hope this is clear to everyone. Yes, let us move forward now. So physical map, political map, thematic map, it's written here. So already we have discussed all these things. Like this is the physical map. It is showing Aravalli Range, Vindhya Range, Satpura Range, Western Ghats, Eastern Ghats, right? Then here we have the political map, which is showing different states, union territories, coastal states, all this thing. And these are the thematic maps. It is showing the rainfall tendency in different states in different months. Okay, let us move forward now. So these are some important components of map: distance, direction, symbols. So that is not significant. Okay, components of Earth. This is now the real geography starts now. Components of Earth. So the first component is referred as lithosphere. Let us try to understand by a diagram. Because reading all a part you have to done on your own. I'm not going to read all these slides here only. Okay, ये आपके लिए मैंने काम छोड़ा है. But yes, I'll be explaining what is a lithosphere, what is atmosphere, what is biosphere, and what is hydrosphere, all these things. These components I'll be explaining you here. So guys, basically the first thing was written here, lithosphere. Lithosphere क्या होता है? So like here we have the Earth, and the outer layer of the Earth is a solid body. It's a solid structure. This solid structure, this rocky structure, it is formed from rocks. So this rocky structure is referred as lithosphere. It is referred as lithosphere. So this lithosphere has dominance of soil, and this soil is capable of supporting vegetation growth, right? So this lithosphere is the base for the existence or the emergence of life on the Earth. So this is lithosphere, right? So it is a solid layer, rock thin layer, and all this thing, right? Then comes next, hydrosphere. Now what is this hydrosphere? Like this, for example, this globe. All these water bodies, the oceans, the lakes, the rivers, they are collectively forming the hydrosphere, the water bodies. So the collective water bodies of existing on the Earth, right? The collective water bodies which are present on the Earth, they are collectively referred as hydrosphere. So we all already know that 71% part of the Earth, or more than that, is basically covered with water. It is covered with water, and 97% of water is found in the oceans, which is too salty for human use. हम लोग कहते हैं सेव वाटर कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स करते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि सर 71% अर्थ पे पानी पानी है, स्टिल वी आर वरीड अबाउट वाटर. तो यार ओशनिक वाटर कैन नॉट बी कंज्यूम, ठीक है ना? और अगर उसको हमें कंज्यूम करना भी है तो उसको उस लायक बनाने के लिए
वी हैव टू फिल्टर इट आउट, और उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉस्टली है। और हमारे यहाँ पे तो मतलब हम देखते हैं ना कि वर्ल्ड में कितने ऐसे प्लेसेस हैं यहाँ पे प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ही नहीं है। तो वहाँ पे अगर वाटर ख़त्म ही हो जाता है तो हम सॉल्टी वाटर से करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो द टेक्नोलॉजी विल बी वेरी कॉस्टली। ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे, उससे पॉसिबल है, पानी पिया जा सकता है इसको, लेकिन द प्रोसेस इज़ वेरी कॉस्टली। इसराइल, सऊदी अरब, बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसी चीज़ें की हुई हैं, ठीक है, बट दे कैन अफोर्ड दैट थिंग। और पॉपुलेशन उतनी नहीं है यहाँ पे, पॉपुलेशन तो unofficially we are the largest populated country right now. We have surpassed China in population. So to support such a large population, we need sustained availability of water. So that's why water is very essential for our life. So the fresh water on earth is available in the form of ice sheets, glaciers, lakes, like this only. Yeah, rivers. Next, atmosphere. The layer, like this is the lithosphere. So this is the lithosphere. This is the lithosphere, guys. Then here we have this is all hydrosphere. Hydrosphere. Then there will be an envelope of gases surrounding the earth. In this envelope of gases, we have nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, helium. These are some of the essential gases. The most important one are nitrogen and oxygen, right? So this envelope of gases surrounding the earth, so that is known as atmosphere. That is known as atmosphere. This is known as lithosphere. The water bodies, they are known as hydrosphere. Right, the water bodies, they are known as hydrosphere. And obviously यहाँ पे बहुत सारी लाइफ भी होगी, like for example the trees, the flora, fauna. So the living component of the earth, they are referred as biosphere. They are referred as biosphere. So we have hydrosphere, we have lithosphere, we have atmosphere, we have biosphere. Did I forgot to mention some other things also? Yes, of course, I have not mentioned certain things intentionally. But yes, for example, for UPSC point of view, the glacial parts, the glaciers, the permanently freezed zones, they are referred as cryosphere. तो ये एक चीज एडिशनल है जो पता होनी चाहिए। बाकी बहुत सारे और भी चीजें हैं, लेकिन दे आर नॉट सो सिग्निफिकेंट फॉर जीएस पॉइंट ऑफ व्यू। सो cryosphere, that is the permanently frozen zones, the glacial regions, so they are referred as cryosphere. Cryo word, cryo का मतलब हो गया extremely low temperature, sphere मतलब region, so they are the regions of extreme low temperature, तो नाम दे दिया उसको हमने cryosphere। सबको क्लियर है चीज ये? गाइस सेशन को लाइक करते चलना, ठीक है, और कहना ना पड़े, सब लोग लाइक करेंगे सेशन को, राइट? और कोई भी डाउट आपको होता है तो राव एकेडमी में आप कॉल कर सकते हैं। वी हैव वेरी डेडिकेटेड टीम टू रिजॉल्व द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और एनसीईआरटी कोर्सेज हमारे आप जरूर एक बार आओ यहाँ पे, सेंटर को विजिट करो भोपाल में, इंदौर में, एंड जस्ट चेक इट योर सेल्फ ओनली, जस्ट मीट आवर फैकल्टीज, मीट सर मैम, यू विल इटसेल्फ गेट टू नो आवर एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड, ठीक है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ।
सो एटमॉस्फेयर, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर में गाइस कुछ लेयर्स होती हैं. Atmosphere has some layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. This will be discussing in detail in subsequent books, subsequent classes. Abhi for time being, you have to know that the first layer from the surface of the earth is referred as troposphere. Then we have the stratosphere. Then we have the stratosphere. And in the stratosphere, we have the ozone layer. In the stratosphere, we have the ozone layer. After stratosphere, we have the mesosphere. After mesosphere, we have the thermosphere, then exosphere. Okay. So we'll be discussing these things in detail in the another classes because 6th class के NCERT में इतना ही mention किया हुआ है. तो we have to limit our knowledge for these type of things, right? Okay, next. So these are the compositions, biosphere. Now continents की बात करते हैं तो there are 7 major continents. These are the continents like Asia, Africa, Europe, North America, South America, Oceania, Antarctica, right? So these are the 7 continents. Continents are the major land masses which are surrounded by water. ठीक है ना? तो बेसिकली ये बना कैसे है? ये बनता है जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी में वर्ड होता है द्वीप. ठीक है, हिंदी में क्या वर्ड होता है? द्वीप. द्वीप यानी आइलैंड जो चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड होता है. फिर वर्ड आता है महाद्वीप. महाद्वीप को इंग्लिश बोलते हैं कॉन्टिनेंट. तो महाद्वीप क्या हो गया? अ वेरी लार्ज लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल इट्स साइड्स. तो आप कोई भी कॉन्टिनेंट देखोगे तो आप देखोगे वो मैक्सिमम साइड से वाटर से सराउंडेड दिखाई देगा आपको. ठीक है. सो अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा. इसको मैं क्लास में एज इट इज रीड करने का कोई लॉजिक नहीं है इसको. ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड. let us try to discuss some concepts here. These are the things. जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया हैज रिसर्च स्टेशंस. कौन कौन से हैं? दक्षिण गंगोत्री और मैत्री. ये 2 स्टेशन हमारा अंटार्कटिका पे. तो अंटार्कटिका किस कंट्री के पार्ट में आता है? जैसे ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया, एशिया, अफ्रीका. तो अंटार्कटिका किस कंट्री का पार्ट है? सो अंटार्कटिका किसी कंट्री का पार्ट नहीं है. परेशान होने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना? ये किसी का पार्ट नहीं है. किसी भी कंट्री का इस पर क्लेम नहीं है. इट्स अ नो मैन्स लैंड. और यहाँ पर बेसिकली क्या है? दिस पर्टिकुलर रीजन कैन बी यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पस. रिसर्च पर्पस से यहाँ पे ऑन एन एवरेज अराउंड 1500 to 2000 लोग यहाँ पे रहते हैं. ऑल ऑफ देम आर रिसर्चर्स हु आर सेटल्ड देयर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. डिफरेंट कंट्रीज. हर कंट्री ने मतलब कई सारी कंट्रीज ने अपने रिसर्च स्टेशन यहाँ पे स्टैब्लिश किए हुए हैं. सो इवन इंडिया हैज आल्सो एस्टैब्लिश्ड देयर रिसर्च स्टेशन देयर. Their name is दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री. इनफैक्ट एक साइंटिस्ट है इंडिया के, मिस्टर सिन्हा करके कुछ नाम था उनका. रिटायर हुए थे जब वो यहाँ इस स्टेशन से. तो उनके नेम पे यहाँ पे अंटार्कटिका में एक माउंटेन को भी रखा गया नाम, माउंट सिन्हा. ठीक है. यस. वैसा मैक्सिमम माउंटेन्स जो वर्ल्ड में है, मैक्सिमम माउंटेन्स वर्ल्ड में जो है वो किसी न किसी के नाम पे ही रखे हुए हैं. ठीक है. जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक माउंटेन है माउंट ईसा. तो माउंट ईसा क्या है? मतलब ईसा सोचता है लोग क्या नाम होगा इसका. सो माउंट ईसा नाम कैसे रखा है? कि जिस जोग्राफर ने उसको डिस्कवर किया था, जिस डेट पे डिस्कवर किया था, उस डेट पे उसकी सिस्टर ईसा का बर्थडे था. तो उसने अपनी सिस्टर के नेम पे माउंटेन का नेम रख दिया. तो ऐसा कुछ होते होंगे लॉजिक की भी. ठीक है, कि जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया है, मे बी दैट पर्सन इज ऑथराइज्ड टू गिव द नेम. सो ऐसे कुछ नेम्स दिए होंगे यहाँ पे. ठीक है. एनीवेज आगे चलते गाइस. ओशियंस. तो ओशियंस वाले पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. अब यहाँ पे पैसिफिक ओशियन जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है. पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड. अटलांटिक ओशियन की अगर मैं बात करूंगा तो अटलांटिक ओशियन आपको कैसा दिखाई देगा? ये एस अल्फाबेट जैसा दिखाई देगा, लाइक दिस. ठीक है. दूसरी चीज, पैसिफिक ओशियन का जो वाटर है ये कंपैरेटिवली काफी ठंडा होगा एज कंपेयर टू अटलांटिक ओशियन. क्या रीजन होगा बताओ? व्हाट इज द रीजन कि व्हाई द पैसिफिक ओशियंस वाटर इज कूलर देन द अटलांटिक ओशियंस वाटर? गाइस रीजन इज वेरी सिंपल. पैसिफिक ओशियन जो है बहुत बड़ा ओशियन है. ठीक है.
इट्स अ वेरी लार्ज ओशियन, तो हीट जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा फील नहीं होती, तो इसलिए हमें लगेगा कि ये ठीक है यार, ये मतलब लैंड पार्ट नहीं ज़्यादा इसके आसपास में, ठीक है ना। बट इफ यू चेक अटलांटिक ओशियन, तो अटलांटिक ओशियन ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेके सदर्न हेमिस्फीयर तक इट इज सराउंडेड बाय लैंड पार्ट। तो क्या होता है कि जब लैंड में बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफर हो जाती है ना, तो इट स्टार्ट्स ट्रांसफरिंग its heat in the form of conduction process to the ocean. So that's why जो यूएसए है, ये रहा यूएसए यहाँ पर, ठीक है, यूएसए का जो ईस्टर्न कोस्ट है वो वार्मर है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन गाइस, ठीक है। सो आगे आगे बढ़ते हैं, अब ओशियंस हमने देख लिया। सो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। सो अर्थ पे जो लैंडफॉर्म बनती है गाइस, वो दो तरह के फोर्स से बनती है, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स को हम बोलेंगे आगे की बुक्स में एंडोजेनिक फोर्सेस, अभी इस क्लास में ये वर्ड नहीं यूज किया हुआ, ठीक है ना। लेकिन जो अंदर से जो फोर्स आ रही है अर्थ के अंदर से इमर्ज होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स, या सिंपल वर्ड्स में लेमन लैंग्वेज में इंटरनल फोर्स। और जो अर्थ के बाहर से जो फोर्स लग रही है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एक सिंपल वर्ड से समझते हैं, एक सिंपल डायग्राम से या मैकेनिज्म से। देखो, अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस पे जो सॉलिड लेयर है लिथोस्फेयर, ये कई सारे फ्रेगमेंट्स में टूटी हुई है, कई सारे फ्रेगमेंट्स में ब्रोकन है ये। एंड दीज ब्रोकन फ्रेगमेंट्स आर रेफर्ड एज प्लेट्स। इनको क्या बोलते हैं हम? प्लेट्स बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये जो प्लेट्स हैं ये कई बार एक दूसरे से टकराती भी है, कई बार एक दूसरे से दूर भी चली जाती है। तो मान लो यहाँ पे दो प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही हैं, these two plates are colliding with each other, and between these two plates there was some sediment. So this sediment will be compressed because of the compression of the force, and it will be converted into folded mountain ranges like this. So internal force of earth की वजह से क्या हुआ, लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रही है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है? एक्सटर्नल फोर्स फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्लाउड्स तो बनेंगे, रेनफॉल होगी तो रेनफॉल होने के लिए क्लाउड तो जरूरी है। जब रेनफॉल होगी इन माउंटेन्स को, जब रेनफॉल होगी तो क्या होगा, रेन वाटर इन माउंटेन्स का इरोजन करता हुआ नीचे आएगा रिवर के फॉर्म में। तो क्या होगा, माउंटेन्स का बहुत ज्यादा इरोजन होगा। इरोजन होने से क्या होगा, ये माउंटेन धीरे धीरे खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, इरेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे की बुक्स में हम पढ़ेंगे, स्पेशली 11th और 11th की बुक्स में, कि द एंडोजेनिक फोर्सेस दे आर रेफर्ड एज द क्रिएटर ऑफ द लैंडफॉर्म, whereas the exogenic forces they are referred as destroyer of the landforms. ठीक है, anyways, so this is about the thing. So here internal force, it leads to the upliftment and the sinking of the earth. It leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. External, it is continuous wearing down and rebuilding of the land surface, erosion and deposition. कहीं पे इरोजन हो रहा है तो ऑब्वियसली वही मटेरियल, वही सेडिमेंट कहीं आगे जाकर डिपॉजिट भी होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में अगर हम देखते हैं, इंडिया के केस में अगर देखेंगे आप, सो in the northern side of the India we have the Himalayan mountain ranges. From Himalaya there are rivers which are coming out, Indus, right? So these rivers, when they are coming out from Himalaya, they have highly eroded these Himalayan ranges, and they have brought so many huge amount of sediment, and they have deposited all these sediments in these regions. इन रीजन्स में इन्होंने सेडिमेंट को डिपॉजिट करके क्या बना दिया है, इन्होंने बना दिया द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो कहीं पे इरोजन होगा तो कहीं पे डिपॉजिशन होगा ही होगा। सो वी कैन से दैट इरोजन एंड डिपॉजिशन दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
Let us move forward now. So mountains. So these are the natural elevation of the Earth's surface arranged in a line known as ranges. So we have some types of mountains, like we have the folded mountain range, we have the block mountains, we have the volcanic mountains, right? These mountains, they have huge reserves of water in the form of lakes, in the form of aquifers. Aquifers क्या होते हैं? माउंटेन्स पे कई जगह पे लेक्स बनी होंगी, जैसे डिप्रेशन, यहाँ पे वाटर स्टोर हो गया तो ये बन गया लेक. एक्यूफर्स क्या होते हैं? What are aquifers? So these are the underground water reserves. So mountains क्या है कि अंदर से कई जगह से एकदम hollow spaces होते हैं, इनमें water store हो जाता है. So they are the good source of aquifers also. ठीक है, कई जगह पे spring water यहाँ से निकल के आएगा, right? So we have different types of mountains. Like this one is the block mountain. एक block की तरह खड़ा दिखाई देगा. These are the folded mountain ranges, right? And volcanic mountain ranges. This is the volcanic mountain here. चलिए आगे बढ़ेंगे. So these are the different types of landforms which are created by the erosion, by the endogenic forces and the exogenic forces. Valleys, mountains, plains, coastline, canyons. Canyons हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना. कैनियंस रिवर एक्शन से बनेंगे ये भी, तो बहुत लेकिन ब्रॉड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, स्ट्रेट होते हैं एकदम. आगे डिस्कस करेंगे इनको हम, नॉट इन द 6th क्लास एनसीईआरटी. सो प्लेटूज क्या होंगे? दे आर द टेबल लैंड स्ट्रक्चर. इट इज अ टेबल लैंड स्ट्रक्चर लाइक दिस. तो इसको हम बोलेंगे प्लेटू. फॉर एग्जांपल द पेनिनसुला प्लेटू, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू, ओके, दंडकारण्य प्लेटू. ऐसे कैसे प्लेटूज है इंडिया में तो. सो इट इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड और फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया. तो तिब्बत का भी एग्जांपल ले सकते हैं, इंटर माउंटेन प्लेटू. तिब्बत क्या है? इंटर माउंटेन प्लेटू. इंटर माउंटेन प्लेटू का मतलब क्या हो गया कि कई सारे माउंटेन्स हैं, उन्हीं के बीच में एक ऐसा प्लेटू है, and again it is surrounded by several mountains. So within a mountain ranges there is a elevated flat land which is known as intermountain plateau. Example इसका ले लेंगे हम तिब्बत plateau. Okay. Then we have the plains. तो plains जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि डिपोजिशनल एरिया होता है, ये डिपोजिशनल स्ट्रेच होता है, एकदम पूरा लेवल्ड एरिया होता है. तो द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस थिंग. ठीक है. So plains is, I hope it is clear to everyone, plains वाला part. चलिए आगे बढ़ते हैं guys. Our country India, मेरा भारत महान. तो मेरा भारत महान, so it is a country of India. अब देखो इंडिया के बारे में तो वैसे भी हमें एक ही जगह बहुत सारे पॉइंट्स अपनी तरफ लिख के रखने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या क्या पता होना चाहिए. लाइक पहली चीज पता होनी चाहिए कि आपको इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे छोड़ो क्या लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ तुम्हें सारी चीजें. नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए, क्या होगा? इंदिरा कोल. सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट. ठीक है. सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, कन्याकुमारी. वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, गुहार मोती. ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, किबिथू. ओके, लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम. So the northernmost point of India, it is Indira Col. Then here we have the islands, Andaman Nicobar. So this is the Indira Point. Here we have the Kanyakumari. This side we have the
Guhar, Moti. So this side we have the easternmost part of India. Easternmost point of India, it is Kibithu. Kibithu. Kibithu is located in Anzaw district. Anzaw district of Arunachal Pradesh, AP. ठीक है. Then Tropic of Cancer is passing through 8 states. ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए. 8 स्टेट्स कौन कौन से होंगे? ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम. So these are the 8 states. Similarly, the Indian Standard Meridian passes through 5 states. 82.5 degree east longitude has been taken as the standard meridian. It is passing through 5 states in India: UP, MP, Chhattisgarh, then Odisha and Andhra Pradesh. ठीक है, तो ऐसे बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए. देन एरिया ऑफ इंडिया. एरिया ऑफ इंडिया इज अराउंड 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. सो ऐसे ऐसे बेसिक चीजें अभी आपको इस लेवल पे पता होने चाहिए, राइट. सो नॉर्थ साउथ कितनी लेंथ है उसकी, तो इट इज अराउंड 3214 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट कितनी है, तो 2933 किलोमीटर. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. लोकेशन. सो India is located in the northeastern hemisphere. India is located in the northeastern hemisphere. Like this is the globe. So India is located in this northeastern hemisphere. So the coordinates. So we have the 82 degree 30 east longitude. ये इसका standard meridian है. And these are the coordinates of India. ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना. देन पाक स्ट्रेट्स सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया. व्हाट इज अ स्ट्रेट? स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी. स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी. जैसे यहां पे आप देखोगे, so here we have the Sri Lanka. So between India and Sri Lanka, here in between we have the Pak Strait. So what is a strait? So strait is a narrow water body which joins two major water bodies or which separates two major land masses. तो यहाँ पे आप देखोगे पाक स्ट्रेट क्या कर रहा है? It is joining Arabian Sea with Bay of Bengal, or it is separating Indian landmass from the Sri Lankan landmass. तो पाक स्ट्रेट इसको सेपरेट कर रहा है. नेक्स्ट, so physical divisions of India. So physical division of India, in the northern side we have the Himalayas. These are the Himalayas, the physical division. Then we have the northern plains here. Then we have this peninsula plateau region. Then we have the western coastal plain and the eastern coastal plain, right? The western coastal plain and the eastern coastal plain. And then we have the island territories, Lakshadweep, Andaman Nicobar. These are the island territories. So physical division का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको पढ़ना है इसको, आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर को बेसिकली एटलस के साथ आपको रिलेट करके पढ़ना है, मतलब पॉज ले लेके पढ़ना है. यहाँ पे हो सकता है कि हम लोग, मैंने आपको, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया, ठीक है ना. सो एटलस के साथ इसको पढ़ोगे एंड जस्ट लोकेट ऑल दीज लोकेशंस ऑन अ मैप. एक मैप को ड्रॉ कर सकते हो A4 शीट पे, एक प्रिंट आउट निकलवा सकते हो बड़े मैप का A4 शीट पे इंडिया का, एंड ट्राई टू लोकेट ऑल दीज प्लेसेस, all these locations on the map. जैसे फॉर एग्जांपल हिमालयन माउंटेन रेंज, तो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री रेंज, हिमाचल हिमालय, आउटर हिमालय, शिवालिक रेंज. ऐसे इनको लाइन अप करना है. कौन कौन से रिवर यहाँ से जा रही है उनको लिखो इसमें. सो दिस इज हाउ यू टू अप्रोच विद दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स. ऐसा नहीं है कि जो लिखा है यही पूछेगा यूपीएससी. यूपीएससी नेवर आस्क व्हाट इज रिटन समवेयर. हाँ, वो क्या पूछेगा? They will be asking what is not written there, यानी इनहेरेंट चीजें, इन बिटवीन द लाइंस आपको पढ़नी पड़ेंगी चीजें. सो इसके लिए दो चीज कर सकते हो कि व्हेन यू आर स्टडिंग एनसीईआरटीज,
simultaneously go through the last year question papers also. Last 6 years 7 years के क्वेश्चन पेपर भी यार देखोगे तो उससे आप यू विल बी गेटिंग अ वेरी क्लियर आइडिया कि किसी चैप्टर को हमें किस डायरेक्शन में या किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. ओके, सो फिजिकल डिविजन्स आई थिंक ये क्लियर है सब कुछ चीजें. So this is all the thing which we have discussed just now, and this is the political division. So we have these states and the union territories, right? तो इसमें जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो सब आपको आइडिया उसका होना चाहिए, वो सब पढ़ के रखना पड़ेगा, ठीक है ना, जितनी भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी. सो ये सब चीज़ें गाइज आपको पढ़ के रखनी पड़ेंगी. इसके बाद आता है नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. देखो तीनों चीज एक ही जगह लिखी है, ये सेपरेट चैप्टर भी बना के दे सकते थे लेकिन उन्होंने तीनों जगह तीनों वर्ड्स एक ही जगह लिख दिया, इंडिया, क्लाइमेट और वेजिटेशन. क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसका मतलब क्या है? देखो किसी प्लेस का क्लाइमेट डिसाइड करेगा वहां पे कैसी वेजिटेशन होगी, ठीक है, और उस प्लेस की वेजिटेशन डिसाइड करेगी वहां पे किस टाइप की वाइल्ड लाइफ होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थ, दिस इज इक्वेटर. सन रेज जो है इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा गिर रही है इस रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन, राइट. सो इक्वेटर पे कहीं पे कॉन्टिनेंट्स हैं एंड कहीं पे क्या है, वाटर बॉडीज हैं, ये इजंट इट. अब देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं. तो आप देखोगे कि कॉन्टिनेंट्स, वाटर बॉडी, कॉन्टिनेंट्स, वाटर बॉडी, कॉन्टिनेंटल लैंडमास, देन water body. Now because the sun rays are falling straight in this region, तो heat बहुत ज्यादा होगी यहाँ पर. So because of vertical sun rays there will be excessive evaporation. There will be excessive evaporation. Water vapors ऊपर जाएंगे, they will form clouds. They will form clouds, and these clouds will be causing very heavy rainfall. So equator पे क्या होगा, डेली बेसिस पे मतलब 2 घंटे 3 घंटे के लिए बहुत हैवी रेनफॉल होती है. ऐसी रेनफॉल को बोलते हैं साइक्लिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लिक रेनफॉल या फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है, डेली बेसिस पे होगी. अब कोई भी प्लेस है, कोई भी प्लांट है, सॉरी, किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए दो बेसिक चीज चाहिए होती है. एक क्या है, द सनलाइट, दूसरा वाटर. बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन सरप्लस. तो यहाँ पे क्या देखोगे आप कि यहाँ पे देयर विल बी एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे विद वेरी डेंस कैनोपी कवर. डेंस कैनोपी कवर मतलब ये जो ट्रीज के अपर पोर्शन है ये एक दूसरे से बड़े जैम पैक्ड होंगे. तो ट्रीज यहाँ पे बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट होंगे. डेंस फॉरेस्ट के साथ साथ क्या होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे एपिफाइट्स भी ग्रो हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि जो छोटे प्लांट्स हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पा रही बड़े ट्रीज की वजह से. तो ये बड़े जो छोटे प्लांट्स हैं क्या करेंगे, ये इन्हीं बड़े ट्रीज को क्लाइम करते हुए ग्रो करना स्टार्ट करेंगे. तो बहुत सारे एपिफाइट्स ग्रो हो जाएंगे. तो क्या हो गया, बड़े बड़े ट्रीज प्लस एपिफाइट्स. अब ऐसे स्पेस में, ऐसे रीजन में किस तरह की स्पीशीज यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगी? यहाँ पे ऐसे स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जो बहुत तेज भागते होंगे, जैसे चीता. चीता डेंस फॉरेस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. जिराफ, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस डेंस फॉरेस्ट. यहाँ पे कैसी स्पीशीज होंगी, यहाँ पे स्पीशीज होंगी जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमेट्स, मंकीज की वैरायटीज होंगी बहुत सारी, रेप्टाइल्स बहुत सारी होंगी, यहाँ पे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स होंगे. तो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी यहाँ पर फ्लोरा फौना की. लेकिन बड़े एनिमल, बड़े साइज के एनिमल्स, एलिफेंट भी अगर यहाँ पे मिलेंगे ना तो वो मिलेंगे जहाँ पे डेंसिटी कम होगी फॉरेस्ट की, ठीक है. जिराफ नहीं मिल पाएगा यहाँ पे. हर्ड्स में जो जानवर रहते हैं जैसे वाइल्ड बफेलो हो गया, जेब्रा हो गया, वो सब यहाँ पे नहीं मिलेंगे
because these are the species of grassland. Are you getting me? So the climate decides the vegetation of a particular region, and vegetation decides which type of wildlife would be there. क्लियर है सबको चीजें? आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए चीजें, ठीक है? कोई डाउट होगा तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आप, ठीक है? राइट नाउ आई डोंट थिंक कि हमारा ये कमेंट वाला सेक्शन वर्क कर रहा होगा यहाँ पर, बट स्टिल यू कैन कनेक्ट विद अस. आप राव आईएएस में कॉल कर सकते हैं, यू कैन कनेक्ट विद अस, राइट? सो गाइस, अब वेदर लिखा है, सीजन लिखा है, पहले लिखते क्या है वेदर, क्या होता है वेदर में, क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस? देखो गाइस, वेदर होता है डे टू डे फिनोमिना. वेदर क्या होता है? डे टू डे फिनोमिना होता है. कि जैसे मान लो विंटर सीजन चल रहा होगा, विंटर सीजन में नॉर्मली कोल्ड कंडीशन रहती है, लेकिन किसी दिन बहुत ज्यादा सनलाइट सीधी पड़ गई, बहुत ज्यादा एकदम क्लियर स्काई था, सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ी है दिन में, तो गर्मी हो गई. पता चला आप विंटर्स में निकले जैकेट पहन के, और कुछ देर बाद ही आपको मतलब अनईजी फील होने लगे, इतना स्वेटिंग हो गई. या समर सीजन चल रहा है, ठीक है, जैसा अभी समर सीजन चल रहा है, लेकिन अभी रेनफॉल होने से क्या हुआ है कि वेदर काफी अच्छा हो गया है. तो वेदर एक टेम्परेरी फिनोमिना हो गया, इट मे लास्ट फॉर फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज. क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है. क्लाइमेट क्या हो गया? इट्स अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना. किसी प्लेस का 25 इयर्स का, 30 इयर्स का, डिपेंड ऑन द स्कूल ऑफ थॉट्स की किसके क्राइटेरिया को हम लेके चल रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज 25 इयर्स. तो किसी प्लेस का 25 इयर्स की वेदर कंडीशन को वहां का क्लाइमेट बोलते हैं. लाइक डेजर्ट, थार डेजर्ट, इट हैज हॉट क्लाइमेट. लद्दाख डेजर्ट, इट हैज कोल्ड क्लाइमेट. ठीक है? सो वेदर इज अ डे टू डे फिनोमिना. देन सीजन्स. सो सीजन्स अकर्स बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू सन. जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन स्टार्ट हो जाएगा. जब सन चला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, कैप्रिकॉर्न के ऊपर चला जाता है, तो इंडिया समेत आसपास के सारे रीजन में विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगा. तो दीज आर द सीजन्स व्हिच आर द रिजल्टेंट ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू द सन. देन आगे बढ़ते हैं गाइस. So India has been broadly described as monsoon type due to India's location in tropical region. Moist rain is brought by the monsoon winds. देखो अभी सिंपल वर्ड्स में आपको समझना है मॉनसून वर्ड होता है क्या है. मॉनसून वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड मौसिम. एक अरेबिक वर्ड है मौसिम, उससे बना है मॉनसून. मॉनसून वर्ड से मतलब क्या है कि इट रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स. ठीक है, सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स. देखो ऐसे होता है सिंपल सी चीज कि मान लो देयर आर टू प्लेसेस, प्लेस ए एंड प्लेस बी. ठीक है, सो प्लेस ए के ऊपर सन एकदम प्लेस ए के ऊपर है, तो सन रेज प्लेस ए के ऊपर एकदम सीधा गिर रही है एंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में. Whereas they are falling over place B, but covering a very long distance and taking very long time also. So obviously place A will be having more temperature as compared to place B. Now because of more temperature, ठीक है, because of more temperature, the molecules of the air will expand and the air will become lighter in weight. It will start rising upward. It will start rising upward. तो जब एयर ऊपर उठ रही है, मान लो ये मार्कर है एंड इट इज आई एम लिफ्टिंग दिस फ्रॉम माय हैंड, सो इट इज रिलीजिंग प्रेशर फ्रॉम माय palm. तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो. द एयर आफ्टर बिकमिंग लाइटर इन द वेट, इट राइजेस अपवर्ड एंड इट लूजेस और इट रिलीजेस प्रेशर हियर. सो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा. यहाँ क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा. दिस प्लेस इज कंपैरेटिवली हैविंग लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू प्लेस ए. तो जब टेम्परेचर यहाँ पर कम है प्लेस ए के कंपैरिजन में, तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कंडेंस होंगे. कंडेंस होने से एयर मॉलिक्यूल क्या होंगे? हैवी हो जाएंगे. तो हैवी होके क्या होंगे? ये नीचे गिरेंगे. तो दे विल बी एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन दिस प्लेस. ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर बन जाएगा. तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर. और जो विंड है उसकी क्या टेंडेंसी होती है? विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर.
विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर, ये याद रखना है बस, ठीक है। दो रिलेशन, टेम्परेचर प्रेशर हैज इनवर्स रिलेशन, फर्स्ट थिंग। सेकंड, wind always move from high pressure towards low pressure, winds always move from high pressure towards low pressure, ये दो रिलेशन याद रख लोगे पूरा काम हो जाएगा। सो इंडिया में मॉनसून कैसे आ रहा है, देखो इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अभी क्या है कि जो सन की पोजीशन कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इंडिया के ऊपर जो लैंड मास है वो ज्यादा हीट को गेन कर रहा है। ज्यादा हीट को गेन करने से क्या होगा, इंडिया का ऊपर बन जाएगा लो प्रेशर। लो प्रेशर वाटर बॉडीज पे इसके कंपैरिजन में टेम्परेचर कम होगा, तो वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, सो विंड दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर। और जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं, तो व्हेन दे आर ब्लोइंग ओवर अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, दे विल बी एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर ऑल्सो। और यही मॉइस्चर लेडन विंड्स इंडिया में आके फिर क्या करेंगी, बारिश करेंगी, जिसको हमने बोला मॉनसून विंड। इसके बाद क्या होगा, विंटर सीजन जब इंडिया में स्टार्ट होगा तो इंडिया पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, और नीचे के रीजन में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा सदर्न रीजन में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये विंड्स वापस इंडिया से जाना स्टार्ट कर देंगी। तो आप देखेंगे सेम विंड, समर में दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, देन विंटर्स में they are taking an angle of 180 degree turn and then they are returning back from India. So this is the monsoon season. अब इतना सिंपल मॉनसून सीजन में, बस अभी सुपरफिशियल वे में हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे मॉनसून में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। थर्मल कॉन्सेप्ट होता है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है, देन उसके बाद जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट होता है, आफ्टर दिस एल नीनो, ला नीना, देन पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, मेडन जूलियन ऑसिलेशंस, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पढ़ने होते हैं। बट यस अगेन वी हैव टू रिमेंबर दैट वी आर गोइंग थ्रू द एनसीईआरटीज ओनली, क्लास 6 एनसीईआरटी। ओके, एनीवेज आगे मूव करेंगे गाइस। अब natural vegetation, so we have the tropical evergreen vegetation। ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन जैसे मैंने आपको बताया कि ये हैवी रेनफॉल वाले रीजन में ग्रो होगी, ठीक है ना। और इसकी स्पीशीज आपको ध्यान रखनी होंगी, कुछ स्पीशीज जैसे महोगनी, इबोनी, रोजवुड, दीज आर द prominent species, prominent vegetations of the tropical evergreen forest. They have very less or negligible or no leaf shedding period. दूसरी बात क्या होती है कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं, इन फॉरेस्ट में एक कॉमन वैरायटी की स्पीशीज ना होकर मल्टीपल वैरायटी की प्लांट्स होते हैं, मल्टीपल स्पीशीज प्लांट्स। और हर स्पीशीज का कोई लीफ शेडिंग पीरियड अगर होता भी तो कॉमन नहीं होता है, इसलिए क्या होता है ये थ्रू आउट द ईयर हमें एवरग्रीन ही दिखाई देते हैं, इसलिए नाम ही पड़ गया इनका एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्टर्न घाट्स के कुछ पार्ट में आपको, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में आपको ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, साउथ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। सो दिस इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन। देन नेक्स्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट का मतलब होता है कि जो फॉरेस्ट है बेसिकली इट हैज सीजनल रेनफॉल, इट इज हैविंग सीजनल रेनफॉल, ठीक है। सीजनल रेनफॉल का मतलब क्या है कि कुछ महीनों में रेनफॉल होगी, बाकी सीजन ड्राई होंगे। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट लीफ शेडिंग पीरियड होगा, ठीक है, बहुत ही क्लियर कट लीफ शेडिंग पीरियड होगा। यहाँ पे एक इमेज थी, आई थिंक वो इमेज करप्ट हो गई है शायद यहाँ पर। तो आपने कई सारे फॉरेस्ट ऐसे देखे भी होंगे, पतझड़ बोलते हैं इसको हिंदी में। आपने देखा होगा पूरा पूरा जो ट्री है पूरा पूरा एकदम पूरे लीफ खत्म हो गई उसके ऊपर से, पतझड़ हो गई उसकी पूरी। और जो फॉरेस्ट का फ्लोर रीजन है वहाँ पे पत्ते ही पत्ते पड़े हैं बहुत सारे। तो डेसिडियस फॉरेस्ट बेसिकली उसी कैटेगरी में आते हैं। तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सारे सेंट्रल रीजन्स में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। स्पीशीज कौन से होंगे, साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट स्पीशीज। इसके बाद आगे चलते हैं गाइस।
थॉर्नी बुशेस लाइक कैक्टस, खैर, बबूल, खेजरी, ठीक है ना। अब ये सब क्या होंगे, तो ये बनते कैसे हैं, ये थॉर्न्स बनते हैं, कांटे कैसे बनते हैं। देखो होता क्या है कि जब जहाँ पे भी पानी की स्कैर्सिटी होती है, वहाँ पे जो प्लांट की लीव्स होती है वो अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लेती हैं, सो डेट वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपनी बॉडी में स्टोर कर सके। डेजर्ट रीजन्स में जो वेजिटेशन मिलती है उनमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। कांटे वाली वेजिटेशन क्यों मिलती है, क्योंकि वो सारी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक होकर पूरी नीडल शेप एकदम थॉर्न्स बन जाती हैं, सो डेट टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लीव्स जो है वाटर को डिस्पोज ऑफ करती है, ठीक है। सो ये आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कई रीजन्स में ऐसी वेजिटेशंस देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट, माउंटेन वेजिटेशन और अल्पाइन रीजन वेजिटेशन, यहाँ की स्पीशीज के नाम है जैसे चेर, पाइन एंड देवदार। साथ में ऐसे ग्रासलैंड्स होते हैं, ये ग्रासलैंड्स जो तुम्हें दिख रहे हैं, इन ग्रासलैंड्स को इंडिया में जम्मू कश्मीर में बोलते हैं मर्ग। फॉर एग्जांपल गुलमर्ग, सोनमर्ग, तनमर्ग, लाइक दिस, ठीक है। इन्हीं ग्रासलैंड्स को हिमाचल प्रदेश में पयार बोलते हैं, और उत्तराखंड में इनको बोलते हैं बुग्याल। उत्तराखंड में they are known as बुग्याल। So these are the grasslands, and these grasslands मतलब they just present a very mesmerizing view, बहुत ही सुंदर व्यू प्रेजेंट करती है ये। एंड एक और चीज होती है कि ये क्योंकि ग्रासलैंड्स है तो इसको ग्रास को कौन खाएगी, लाइव स्टॉक्स खाएंगे। तो यहाँ की कम्युनिटीज है कुछ जैसे गुज्जर्स, बकरवाल्स, ये क्या करते हैं, जो ग्रासलैंड्स गर्मियों के सीजन में ग्रो होते हैं तो ये समर सीजन में हिल टॉप पे चले जाएंगे अपने भेड़ बकरियों को लेके, और विंटर सीजन में जब यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी तो ये नीचे आ जाते हैं ऐसे अपने भेड़ बकरियों को लेके वापस। तो दे प्रैक्टिस अ सीजनल माइग्रेशन प्रैक्टिस। तो दिस सीजनल माइग्रेशन प्रैक्टिस इज नोन एज ट्रांसह्यूमेंस। इसको बोलते हैं हम ट्रांसह्यूमेंस, ठीक है। तो बुग्याल, पयार, मर्ग, एग्जाम्पल मैंने बताया गुलमर्ग, सोनमर्ग, तनमर्ग, ठीक है। नेक्स्ट, then after this we have the mangrove forest. मैंग्रोव फॉरेस्ट ये समझ लो दे आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट टू कंजर्व द कोस्टल इकोसिस्टम। तो क्योंकि इनकी क्या होती है ना, ये ऐसी एरियल रूट्स होती है। एरियल रूट्स कैसी होती है, मतलब ये सॉइल से बाहर निकल के जाती है, मार्शी एरिया में ग्रो होते हैं ये, और एरियल रूट्स होती है इनकी, ठीक है। तो क्या होता है, ये रूट्स आपस में स्ट्रांगली निट हो जाती है, पूरी फंस जाती है ऐसे। तो क्या होता है कि सपोज करो, सपोज we have two type of coast. We have two type of coast, और जो सी वेव्स है they are continuously approaching these coast. They are continuously approaching these coast. But the difference is that this particular coast is not having any significant quantity of significant amount of forest, whereas this particular coast is having very dense cover of mangrove vegetation. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसका ज्यादा इरोजन होगा, एंड ये कंपैरेटिवली बचा रहेगा कोस्ट पूरा। क्यों बचा रहेगा, बिकॉज इट हैज वेरी डेंस कवर ऑफ मैनग्रोव्स। सो मैनग्रोव्स आर वेरी एसेंशियल टू कंजर्व द कोस्टल इकोलॉजी। दैट्स व्हाई continuously there are environmentalists who are fighting against various agencies to protect the mangroves in the coastal areas. Kolkata mein there was a name of one environmentalist, it was in news, sorry it has slipped out from my mind also. So that environmentalist is fighting with builders of those region from the last 30 years to protect mangroves, क्योंकि builders लोग को क्या करना होता है, कोस्टल एरिया में एकदम सी फेसिंग फ्लैट्स बनाने होते हैं। सो वो लोग तो उनके लिए तो वो तो चाहेंगे मैनग्रोव्स कल के कटते आज काटे जाए। तो बेसिकली दीज एनवायरमेंटलिस्ट दे आर वर्किंग देयर अगेंस्ट बिल्डर्स, सो जस्ट टू प्रोटेक्ट द मैनग्रोव्स।
So mangroves, they are very essential. They will be protecting the coastal regions from high tides, from tsunamis, from cyclones, adverse impact of tsunamis, cyclones, and high tides. So guys, I hope you have liked this session. If you have any doubt, so you can connect with RAO'S IAS Academy, and I wish you all the best and see you soon in the next session. Till then, bye bye, take care.